So let's get started with the physical foundations. Living cells and organisms must perform work to stay alive and to reproduce themselves. Obviously, अब कोई भी लिविंग सेल है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो कोई भी वर्क परफॉर्म करेगा खुद लाइव रहने के लिए, खुद अलाइव रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए. सो वो एनर्जी की सिंथेसिस करेगा. द सिंथेटिक रिएक्शंस दैट अकर विद इन सेल्स. अब जो सिंथेटिक रिएक्शंस हैं जो एक सेल के अंदर हो रही हैं, लाइक synthetic processes in any factory require the input of energy. तो कोई भी ऐसी प्रोसेस है जो कि सिंथेटिक है, यानी कि उस ऑर्गेनिजम्स के द्वारा हो रही है, ना कि नेचुरली वो हो रही है. तो अब उस प्रोसेस के लिए क्या होगा, इनपुट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. सो एनर्जी इज़ ऑल्सो कंज्यूम्ड इन द मोशन ऑफ अ बैक्टीरिया. जो एनर्जी होती है वो एक बैक्टीरिया के मोशन से लेके एक ओलंपिक स्प्रिंटर जो होती है, स्प्रिंटर मतलब कि जो ओलंपिक्स में जो भागते हैं उन स्प्रिंटर्स की, उनके मोशन के लिए भी एनर्जी लगती है. इन द फ्लैशिंग ऑफ फायर फ्लाई और द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ एन ईल. जो एक फायर फ्लाई जो होती है वो जब चमकती है उसमें भी लगती है, और जो एक ईल होता है जो वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करता है तो उसमें भी एनर्जी लगती है. एंड द स्टोरेज एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एनर्जी. जो स्टोरेज होता है और एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि जो हमारे जीन्स होते हैं, जीन्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और उसको वो एक्सप्रेस करते हैं हमारी बॉडी में. सो उसके लिए भी हमें एक एनर्जी की, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट विच स्ट्रक्चर रिच इन इंफॉर्मेशन इनविटेबल बिकम डिसऑर्डर्ड एंड मीनिंगलेस. सो अगर वो जो हमने स्टोर की हुई है इन्फॉर्मेशन, अगर उसके पास एनर्जी नहीं है तो वो विदाउट एनी स्ट्रक्चर हो गई, यानी कि वो सिर्फ एक वो जो इन्फॉर्मेशन है वो डिसऑर्डर्ड हो गई और मीनिंगलेस हो गई, उसका कोई मीनिंग नहीं है. इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सेल्स हैव डेवलप्ड हाईली इफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर कपलिंग द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट और फ्यूल्स टू द मेनी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस दे मस्ट कैरी आउट. तो हमारा जो कोर्स ऑफ एवोल्यूशन है उसमें सेल ने डेवलपमेंट किया, सेल डेवलप हुई, वो हाईली इफ़िशिएंट मैकेनिज्म बनाया उसने. उसमें उसने जो सनलाइट एनर्जी थी उसको कंज्यूम किया एज अ फ्यूल. एंड वन गोल of biochemistry is to understand in quantity and chemical terms the meanings of which energy is extracted. So biochemistry का ये भी एक वो होता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्वांटिटी में और केमिकल टर्म्स में वो जो एनर्जी है उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है, उसको हमने चैनलाइज किया है और वो किस तरीके से यूज़ हो रही है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से. We can consider cellular energy conversions like all other energy conversion in the context of law of thermodynamics. तो हम जितने भी सेलुलर एनर्जी के कन्वर्जन्स हैं उनको हम जो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हैं उनसे हम समझ सकते हैं. So living organism exist in dynamic or steady state, never at equilibrium with their सराउंडिंग. सो डायनामिक मतलब होता है चलते रहता है जो चीज़. डायनामिक्स मतलब कि वो स्टेबल नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है एक जगह पे, वो चलती रह रही है. सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो वो एक डायनामिक फॉर्म में होते हैं ऑब्वियसली, और उनकी जो एनर्जी होती है वो भी डायनामिक फॉर्म में होती है. वो कभी भी अपने इक्विलिब्रियम में नहीं होते अपने सराउंडिंग के साथ. तो वो क्या चीज़ है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. The molecules and ions contained within a living organism differ in a kind and in concentration from those in the organism surrounding. तो हम स्टार्टिंग से यही चीज़ पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में कि जो भी मॉलिक्यूल्स और आयंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन अलग होती है और उनका जो काइंड होता है वो भी अलग होता है, वो अलग तरीके के होते हैं. सो अ पैरामीशियम इन अ पॉन्ड, अ शार्क इन एन ओशियन एंड यूकैरियोट्स
in erythrocyte in human blood stream, an apple tree in an orchard, all are different in composition from their surrounding, and once they have reached maturity, all to a first approximation maintain a constant composition in the face of constantly changing surrounding. अब अगर हम एक पैरामीशियम की बात करें जो कि एक पॉन्ड में प्रेजेंट है, एक शार्क की बात करें जो कि ओशन में प्रेजेंट है, ह्यूमन की इरिथ्रोसाइट्स की बात करें, एक एप्पल की बात करें, ये सब क्या है, ये डिफरेंट हैं. दे ऑल हैव डिफरेंट कंपोजिशंस. वो अपने सराउंडिंग की कंपोजिशन में डिफरेंट हैं. वंस दे हैव रीच्ड मेच्योरिटी, एक बार वो मतलब एक कॉन्स्टेंट मेच्योरिटी में चले जाते हैं, यानी कि अगर एक एरिथ्रोसाइट मेच्योर हो गई है तो फिर उसके बाद उसकी एक कांस्टेंट कंपोजिशन होती है, फिर उसके बाद वो चेंज नहीं होती. तो ये उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है यही होती है अपने सराउंडिंग के साथ. Although the characteristics composition of an organism changes little through time, the population of molecule within the organism is far from static. तो जो ये कैरेक्टर्स हैं, कंपोजिशन है ऑर्गेनिज्म की, वो थोड़ा बहुत टाइम के साथ चेंज होती हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन है एक मॉलिक्यूल की, उस ऑर्गेनिज्म की, वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक होती है. यानी कि अगर हम एक पॉपुलेशन में एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिज्म के साथ स्टैटिक रहता है. स्मॉल मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, सुप्रा मॉलिक्यूल्स, ये सारे क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट में, चाहे प्लांट की कितनी भी जनरेशन आए, बट दैट सेल वॉल इज़ प्रेजेंट विच इज़ शोइंग इट्स स्टैटिक पार्ट विद द सराउंडिंग. And supramolecular complexes are continuously synthesized and then broken down in chemical reaction that involve a constant flask of mass or energy through the system. तो ये जो सुप्रा मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली सिंथेसाइज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये ब्रोक करते हैं केमिकल एनर्जी को जो कि इन्वॉल्व होती है कांस्टेंट फ्लस्क में मास और एनर्जी के साथ. The hemoglobin molecule carrying oxygen from lungs to brain at this moment were synthesized within the past month. जो एट प्रेजेंट जो हमारी बॉडी में आरबीसी वर्किंग है वो कुछ महीने पहले सिंथेसाइज हुई है. बाय द मंथ दे विल हैव बीन डिग्रेडेड. अब जैसे जैसे मंथ पास होंगे, जैसे यानी कि 120 डे इज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी. सो आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर फ्यू वीक्स और आफ्टर सम टाइम इट विल डिग्रेड, और जो इंटायर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो रिप्लेस हो जाएगा. द ग्लूकोज यू इंजेस्ट with your most recent meal is now circulating in your bloodstream. जो ग्लूकोज हमने इनटेक किया था इन फॉर्म ऑफ चॉकलेट्स और इन फॉर्म ऑफ फूड और इन एनी फॉर्म, दैट ग्लूकोज जो इंजेस्ट हुआ है काफ़ी टाइम पहले, वो एट प्रेजेंट हमारी ब्लड में प्रेजेंट है. Before the day is over, these particular glucose molecule will have been converted into something else. और कुछ टाइम के बाद ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूरी तरीके से किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गया होगा, बी इट कार्बन डाइऑक्साइड और फैट परहैप्स, एंड विल हैव बीन रिप्लेस्ड विद अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ग्लूकोज, और नई फ्रेश सप्लाई ऑफ ग्लूकोज से रिप्लेस हो जाएगा. So that your blood glucose concentration is more or less constant over the whole day. So कहीं पे हमारे ब्लड जैसे जिस टाइम पे हमने अपनी मील ली है उस टाइम पे हमारा ग्लूकोज का लेवल थोड़ा सा हाई होता है इन कंपैरिजन टू द टाइम वी आर फास्टिंग, वी आर नॉट हैविंग आवर मील. सो ये एक wholesome, more or less a constant thing, that glucose will replaced by the other molecule of glucose. The amounts of hemoglobin and glucose in blood remain nearly constant. अब जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है वो भी नियरली कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो इसका रेट होता है सिंथेसाइज का और इनटेक का वो नियरली कांस्टेंट है. That's why just balance the rate of its breakdown.
कंजप्शन और कन्वर्जन इनटू सम अदर प्रोडक्ट। तो ये बैलेंस बना के रख रहा है कि उसका इनटेक और उसका कंजप्शन और उसका कन्वर्जन जो हो रहा है वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है। द कॉन्स्टेंसी ऑफ कंसंट्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ डायनामिक स्टडी स्टेट। तो ये जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन है ये एक डायनामिक स्टेट है, अ स्टडी स्टेट दैट इज़ फार फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो ये एक डायनामिक यानी कि ये चलती रह रही प्रोसेस है, इट्स नॉट इन एन इक्विलिब्रियम एट ऑल। मेंटेनिंग दिस स्टडी स्टेट रिक्वायर्स द कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी। अब इस स्टडी स्टेट को लगातार बनाए रखने के लिए भी हमको एनर्जी की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। व्हेन द सेल कैन नो लॉन्गर जनरेट एनर्जी इट डाइज एंड बिगिंस टू डीके टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम। अब अगर कोई सेल है जो कि एनर्जी को नहीं जनरेट कर पा रही है तो वो क्या करती है, वो डाई हो जाती है और बिगिन करती है टू डीके टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग। और यहाँ पे वो अपने जब after its death, after being a decay, it is towards its equilibrium. We consider below exact what is meant by steady or equilibrium. So the meaning of equilibrium is it's with its surrounding is that it's in a constant state right away after that. So this is what this paragraph says. So here we have a system as all the reactant and product present, the solvent that contain them and the immediate atmosphere in a short everything within a definite region of space. The system and its surrounding together constitute the universe. So this is in thermodynamical term which states that a system and its surrounding forms a universe. That's what written. In the system exchange neither matter nor energy with its surrounding. It is called as an isolated system, and the system in which there is an exchange of energy but there is no exchange of matter, then that is called a closed system. And those system in which both energy and matter are being changed with the atmosphere, then that is called an open system. So here we can take a few examples which I will give you. First is an isolated system is in bottle. It's in thermo insulated bottle in which neither the heat can go from outside nor the heat from inside can go outside. So it is an isolated system. After that, while talking about a closed system, then we can talk about a bottle which is not in thermo insulator, means the heat can be transferred from it to the outside but not the matter inside it. Now the third example which we have taken, let us take an example of a vessel in which water is present and I start on the flame and the vapor start to evaporate. So in this system both energy is coming out, means heat is coming out and the matter is coming out from this system, then it is called an open system, which is written here. Then a living organism is an open system. Like I am an open system, you are an open system. Every living organism is an open system, means its energy and matter both can be exchanged with its surrounding. It exchanges both matter and energy with its surrounding. Living organisms derive energy from their surrounding in two ways. Now those which are living organisms like us, so we can derive energy from our surrounding in two ways. The two ways which are given are, they take up chemical fuels such as glucose from the environment and extract energy by oxidizing them.
Now, while talking about chemical fuels like glucose is something which we used to take from outside from our environment, and they absorb energy from sunlight. From sunlight, energy is absorbed by the plants, and plants used to convert it into the glucose, and then we humans we used to take up the glucose. So the first of thermodynamic developed from physics and chemistry, but fully valid for biological systems as well. So the very first law of thermodynamics, which we have which we have discussed, that is, energy can neither be created nor be destroyed. It is totally and fully valid to biology as well. So describes the principle of the conversion of energy in any physical or chemical change. The total amount of energy in the universe remain constant, although the form of energy may be changed. So this is the first law of thermodynamics, which states that energy can neither be created nor destroyed. Next thing we are talking here is cells are consummate transducers of energy, capable of interconverting chemical, electrical, mechanical and osmotic energy with greater efficiency. So जो हमारी cells होती हैं वो ट्रांसड्यूस कर सकती हैं एनर्जी को, which are capable of interconverting chemical, electromagnetic, mechanical or osmotic energy with great efficiency. Now moving towards the next topic, which is the flow of electrons provides energy for organisms. Nearly all living organisms derive their energy directly or indirectly from radiant energy of sunlight. Obviously this statement is so true कि कोई भी living organism है या फिर means be it a plant, be it a animal or be it anyone, nearly all the living organism, what they do is they derive their energy from sunlight, which arises from thermonuclear fusion reactions carried out in the sun. तो सन से जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो तभी निकल पाती है जब उसके अंदर कुछ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शंस हो रही हैं. Photosynthetic cells absorb light energy and use it to derive electron from water to carbon dioxide, forming energy-rich products such as glucose, starch and sucrose, and releasing oxygen into the atmosphere. अब जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, वो एब्जॉर्ब करती हैं इस लाइट को, और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड से मिल के या जो भी प्रोसेस है उसे करके एक एनर्जी रिच प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं. It can be form starch or it can form sucrose, and what it do is it release the oxygen into the atmosphere. So this is the given. Now the non-photosynthetic cells and organisms obtain the energy they need by oxidizing the energy-rich product of photosynthesis and they then passing the electron to the atmosphere. तो यहाँ पे से लाइट ने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए उसी से ये O2 और H2 को मिला जुला के जो है इसने ग्लूकोज की फॉर्मेशन की. अब इसमें लिखा है कि जो नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं वो इसी एनर्जी रिच प्रोडक्ट को कंज्यूम करके इलेक्ट्रॉन्स पास करके प्रोडक्ट फॉर्म करती हैं.
atmospheric oxygen to form water, carbon dioxide and other end product which are recycled in the environment. So this is an energy yielding oxidation of glucose. So virtually all energy transduction in cell can be traced to this flow of electron from one molecule to another. So virtually हम क्या कर सकते हैं, ये पूरी एनर्जी का हम ट्रेस कर सकते हैं, हम इसको ट्रैक कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में. ये जो प्रोसेस होती है इसको हम डाउनहिल कहते हैं. फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल एज सच. दिस इज फॉर्मली एनालॉगस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बैटरी ड्राइवन इलेक्ट्रिक सर्किट. All these reactions involve electron flow or oxidation reactions. One reactant is oxidized. Oxidized means loses its electron, and another is reduced means gains its electron. It's like oil ring. Just remember these two terms. It means oxidation is losing and reduction is gaining. So here is reactant is oxidized. Oxidized means oxidation is losing and reduction is gaining. So in this way an oxidation reduction process takes place. Now let us discuss this diagram. What is given in this diagram is first, nutrient in environment, complex molecules such as sugar, fat, sunlight. Now let's see what is written here is during metabolic reaction transduction, the randomness of the system plus surrounding express quantitative as entropy increases as the potential energy of complex nutrition molecule decreases. Living organism or extract energy from their surrounding, convert some into its form, and randomness, this is what given. So this potential energy, then energy transduction accomplish work, chemical transformations within cells, cellular work, chemical synthesis, mechanical work, whatever the work is done. After that heat is released. Then metabolism produces compounds simpler than the initial fuel molecules CO2, NH3, H2O, HPO4. It's then decreased randomness, entropy in the system, and simple compound polymerized to form information-rich macromolecules. For example, RNA, DNA, protein, etc. So here this is completed. Now we will talk about creating and maintaining order requires work and energy. Creating and maintaining order requires work and energy. DNA, RNA and protein are informational macromolecules because they contain our genetic information. In addition to using chemical energy to form the covalent bond between the subunit in these polymer. अब ये जो इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनमें हमने एक्स्ट्रा केमिकल एनर्जी देनी पड़ती है इन मैक्रोमोलिक्यूल्स के पॉलीमर्स में कन्वर्ट होने के लिए. द सेल्स मस्ट इन्वेस्ट एनर्जी टू ऑर्डर द सब यूनिट इन देयर करेक्ट सीक्वेंस. अब पहली तो एनर्जी यहाँ पे यूज़ होती है इनको कोवलेंट बॉन्ड में ऐड करने के लिए. दूसरी हमें यहाँ पे एनर्जी खर्च करनी पड़ती है कि अपनी सब यूनिट्स में एक करेक्ट सीक्वेंस में ऐड हों. इट इज़ एक्सट्रीमली
probable that amino acid in a mixture would spontaneously condense into a single type of protein with a unique sequence. So it's very astonishing that how different amino acid in a mixture, they just condense to form a single protein which is of a unique sequence. So this would represent increased order in a population of molecule, but according to second law of thermodynamics, the tendency in nature is toward ever greater disorder in the universe, the total entropy of the universe continuously increasing. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अम्यूनो एसिड हैं वो कंडेंस होते हैं, वो फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स को, और ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं. एंड जो सेकेंड लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, वो यही बताता है कि जो हमारी टोटल इंट्रॉपी है, इंट्रॉपी यानी कि बिखराव, डेंसनेस, किसी चीज़ की घनत्व, वो हमेशा बढ़ते रहता है. Gharatva is not an appropriate word. It means the more chaoticness, means the system is getting more chaotic, more disturbed, more like these terms will use in this. So continuously increasing. To bring about the synthesis of micromolecule from their monomeric unit, free energy must be supplied to the system. तो अब इनका हमें जब इन मैक्रोमोलिक्यूल्स की हमको सिंथेसिस करनी है मोनोमेरिक यूनिट के लिए, तो इसमें फ्री एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है. The randomness or disorders of the component of a chemical system is expressed as entropy. So the randomness is the correct word we can use for it. So any change in randomness of the system is expressed as entropy change, that is delta S, which by convention has a positive value when randomness increases, and randomness always keeps on increasing. So J. Willard Gibbs, who developed the theory of energy changes during chemical reaction, shows the free energy content, that is Gibbs energy, which is represented by G of the closed system, can be defined in terms of three quantity. So यहाँ पे जो गिब्स एनर्जी है, जो कि जो कि रैंडमनेस को इंक्रीज कर रही है, वो एनर्जी जो है एक क्लोज सिस्टम में डिस्कवर की जे विलार्ड गिब्स ने, एंड उन्होंने इस एनर्जी को 3 टर्म्स में डिफाइन किया है. पहला है इंथैल्पी. इंथैल्पी क्या है? रिफ्लेक्टिंग द नंबर एंड काइंड ऑफ बॉन्ड्स. सो बॉन्ड की ब्रेकिंग में और फॉर्मिंग में इंथैल्पी टर्म यूज़ करते हैं हम. एंट्रोपी मीन्स randomness and the absolute temperature, and the temperature is in Kelvin, and the definition of free energy is G is equal to H minus Ts. When a chemical reaction occur at constant temperature, the free energy change delta G is determined by the change in enthalpy reflecting the kind and numbers of chemical bond and non-covalent interactions broken and formed, and the entropy change delta is describing the change in the system randomness. So delta G is equal to delta H T delta S, delta H minus T delta S. So here we have a figure given which is of adenosine triphosphate, that is an ATP. The removal of terminal phosphate, that is this ATP by breakage of phosphorus is highly और ये क्या करती हैं? एनर्जी को रिलीज करती हैं. A process tends to occur spontaneously only if delta G is negative.
Yet our cell function depends largely on molecules such as protein and nucleic acid, for which the free energy of formation is positive. The molecules are less stable and more highly ordered than mixed in their monomeric unit. So जो डेल्टा जी होती है वो नेगेटिव होती है इस प्रोसेस में. जो सेल फंक्शंस होते हैं वो लार्जली एक मॉलिक्यूल जैसे कि एक प्रोटीन और एक न्यूक्लिक एसिड की फ्री एनर्जी की फॉर्मेशन जो पॉजिटिव. द मॉलिक्यूल आर लेस स्टेबल मींस जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल कम स्टेबल होता है. जितनी कम एनर्जी होगी उतना ज़्यादा एक मॉलिक्यूल स्टेबल होगा. सो द मॉलिक्यूल आर लेस स्टेबल एंड मोर हाईली ऑर्डर्ड देन अ मिक्सचर of a monomeric compound. To carry out these thermodynamically unfavorable energy requiring reactions, cell couple to other reactions that liberate free energy. कुछ एनर्जीज होती हैं जो कि एनर्जी रिक्वायरिंग होती हैं, जिनमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो वो जो इंडोजेनिक यानी इसको इंडोथर्मिक भी कहते हैं. तो वो जो इंडरजेनिक जो प्रोसेस जो रिएक्शंस होती हैं वो एक्सर्जेनिक रिएक्शंस के साथ कपल करना पसंद करती हैं सो दैट द ओवरऑल प्रोसेस इज एक्सर्जेनिक. The sum of the free energy change is negative. The usual source of free energy is coupled biological reaction in the energy released by hydrolysis of phosphoenolate bonds such in those in adenosine triphosphate. सो अम्यूनो एसिड से पॉलीमर बनने की प्रोसेस क्या होती है? इट्स एन पॉजिटिव प्रोसेस यानी कि इट्स एन इंटरजेनिक प्रोसेस यानी कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड. और प्रोटीन और जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी टूटने की प्रोसेस क्या होती है? इट्स एन negative यानी exergenic. When these reaction are coupled, the sum total of delta G1 plus delta G2 is negative, so the overall process is exergenic. By this coupling strategy, cell are able to synthesize and maintain the information rich polymer essential to life.